So, we are going to start a new chapter today, that is life processes. Life processes. So, in this chapter, how do we tell the difference between what is alive? How do we know what is alive? If the person breathes, we only know this if a person breathes, it means he or she is alive. If the person doesn't, it means he or she is not alive. But the question is, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? So if we see, so there are some common examples, there are common daily examples, like if we see a dog running, or cow chewing curd, or a man shouting loudly on a street, then we know that these are living beings. Means like cows that we see, and a man shouting loudly on a street means they are indulging in some of the activities, means they are living. So these things are living. So what if a dog or a cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. Why? Actually, let's suppose when when we are defining that what is life, we are saying that somebody sleep, then we are saying that he is not breathing. When we sleep, then we are also breathing. But it doesn't mean that we are not alive. We would still think that we are alive, but how did we know that? But we don't know that how we are alive, because when we sleep, then we are also breathing. So there are many questions. We see them breathing and we know that they are alive. So what about plants? But the main question arises, but when we see the people, when we see the people, when we see the people sleeping, they are breathe. है ना? So when we see the people, they are breathing, then we can say they are alive. But how do in plants? But how do in plants we know that they are breathing, or how their system is working on? So let's see next. How do we know that they are alive? So there are too many questions. So in conclusion, we have to see there's a difference between what is live and what is alive. So how do we know that they are alive? So main question is about plants. So how plants are alive? We see them green, isn't it? So some of us will say that we see them green, that's why they are alive. But what about plants that have leaves of colors other than green? Listen, some of the people say that they are green in color. They are green in color, that's why the plants live. But it doesn't mean they are alive. So if all plants are, but all plants are green, सभी प्लांट्स तो ग्रीन नहीं होते. अगर सभी प्लांट्स ग्रीन होने लग गए तो क्या होता है कि the question is, how do we know that they are alive? How do we know they are alive? They are alive, they grow over time, so we know that they are alive. Some will say, so they are giving reasons that what will other persons say. So question is, how do we know that plants are alive? We breathe, and that's why we know that we are
alive. But how do we know the plants are alive? Some people will say that they are green in color. Some people will say, but all plants are not green in color. Then it means they are not alive. So the answer of this question will come in next topics as we go. So they grow over time. So we know that they are alive. Some will say, in other words, let's see, we tend to think of some sort of movement. So there is some sort of movement in plants, either growth related or not, as common evidence or being alive. But plant that is not visibly growing is still alive. And some animals can breathe without visible movement. So we can say that if there is a no movement, then also the animal is alive. The animal is alive. But how can we say? So the question is here again. Now, what are the movements? Movements. What are the movements in the plants? What are the movements in animals? Here, question can come. How the movements tell? So, movements of this is basically introductory part. So, main topic is next now. So, this is the only introduction. Movements of over very small scales will be invisible to the naked eye. So, we cannot see the movements. We cannot see the movements at how they are breathing. We cannot see the movements at how plants and animals are breathing, even when they are not moving their hands, when they are not moving their legs. So, alive doesn't means that. So here is one thing: alive doesn't means that when somebody is moving hands, or somebody is, or some animal or human being is doing some activity, then it does not means it is alive. Only then only he is alive. So there are some other factors which make them alive. For example, in this invisible molecular movement necessary for life. Is this invisible molecular movement necessary for life? Now see, I'll tell you what is it. Invisible molecular movement. So what is invisible molecular movement? So here is a confused one question here. Invisible molecular movement. So first of all, we'll read out. If we ask this question to a professional biologist, so if you ask this question, अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछोगे कि अगर ये मूव नहीं कर रहा कोई, तो वो कहेगा कि मर गया, ठीक है ना। और अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को पूछोगे कि ये क्या है, तो वो कहेगा ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट है इसमें. So they will say yes, yes, he is alive. So in fact, viruses do not show any molecular movement in them. So ये जो molecular movement होती है, ये हम naked eye से नहीं देख सकते. हम naked eye से नहीं देख सकते. Molecular movement naked eye से नहीं देख सकते. ये हमें microscope से देखना पड़ता है. So, and that is partly why there's a controversy about whether they are truly alive or not alive. And that is the big controversy, that is the big question mark on biologists, that they are alive or not alive. We cannot see the movement of also viruses with the naked eye. So what are viruses? What are viruses? What are viruses? These are non-living. We cannot see them with naked eye. Naked eye means खुली आंखों से. We cannot see them with the naked eye. We have to use different microscopes. Even the electron microscopes are used for the for seeing these very smaller bacterias, viruses. So next is the about next is about that why are molecular movements needed for life?
why these movements are needed for life. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. So these organisms are well organized structures. So they can have tissues, then tissues have cells, then cells have smaller components in them, and so on. So इसमें क्या क्या है? Listen. It's a very interesting thing that human organism, जो कोई human के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है वो बता रहे हैं. तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है, सो दे कैन हैव टिश्यूज. सो टिश्यूज होते हैं, सबसे पहले टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज के बाद सेल्स की फॉर्मेशन होती है. टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर टिश्यूज, सेल्स, टिश्यूज होते हैं, फिर सेल्स होते हैं. सेल्स के बाद इनके जो है स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं. इनके जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं. इनके स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं. सो पहले टिश्यूज, टिश्यूज के बाद सेल्स, फिर स्मॉलर कंपोनेंट्स, उसके बाद सेल्स के बाद ऑर्गन फॉर्म्स होते हैं. ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है. सो ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा होता है. उसके बाद तो हमने बताया हुआ है कि वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ. ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट. सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण कि दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रीदिंग ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. कि मान लो कि अभी आप ये जो स्ट्रक्चर बना है, टिश्यूज है, सेल्स है, ये बना हुआ है, ठीक है. मान लो कि इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे इफेक्ट्स आ गए जो आपका ये सेल्स, जो ये सिस्टम है वो अभी डैमेज होने लग गया, ठीक है. ये कुछ इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स के कारण भी हो सकता है, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स करके भी हो सकता है. इन ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, मान लो बॉडी सिस्टम ब्रेक हो जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे से वर्क नहीं होता. ह्यूमन बॉडी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे से ब्रेक नहीं होता, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी. Now, source living creatures must preparing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, so they must involve molecules around time. So, what are the maintenance process in the living organisms? So, इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लो कि हमें कोई चोट लग जाती है, हमारे हैंड पे नाइफ से चोट लग जाती है और उसमें से ब्लड निकलता है. सो अब ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लड निकलता ही रहता है और उसमें एक ब्राउन स्पॉट बन जाता है या फिर वॉयलेट ब्राउन जैसा स्पॉट, जिसको हम करंट भी कहते हैं, है ना. और उसकी जो है आप क्लासेस में पढ़ोगे, अगर आपने मेडिकल लोगे तो या फिर पढ़ा भी होगा अपने टर्म, उसको हम मियोसिस कहते हैं. वो मियोसिस होती है, उस सेल की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सेल्स. मेंटेनेंस ऑफ सेल, ये सेल साइकिल और सेल स्ट्रक्चर आपको ये +1 में पढ़ाएंगे, ये वाला पार्ट. उसके बाद व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. सो बेसिकली हमारा जो टॉपिक करना है हमने, डेट इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. इन होते क्या है, हमने ये तो पता लग गया कि अलाइव क्या होता है, लाइफ क्या होता है, सेल कैसे बनता है, मेंटेनेंस कैसे होती है, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. What are life processes? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular.
तो चलता ही है ना, वो जो सिस्टम है वो तो चलेगा। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उठ गए तो सिस्टम रुक गया, या फिर हम सो रहे हैं तब सिस्टम रुक गया, या फिर हम खा रहे हैं तब सिस्टम रुक गया। The system still continues. The system still continues. If we are eating, if we are bathing, if we are doing something else, the system is a continuous process. But, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. सिस्टम तो चलेगा, अगर हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिस्टम, बॉडी सिस्टम तो चलता है. This process which together perform the maintenance job, these are called as the life processes. So इसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कह रहे हैं. इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वो क्लियर हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बैठे हुए हैं, अगर हम सो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है अगर हम, हाँ उसके लिए हमें कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी सिस्टम को चलाने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम सही चले, है ना. और ज़रूरी नहीं है हम सो रहे हैं हमारा सिस्टम रुक गया, नहीं जी ऐसा नहीं होता. सिस्टम जो है वो चलता है, सिस्टम दैट कंटिन्यूस. आगे देखिए, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, डैमेज एंड ब्रेक डाउन. Maintenance processes are needed to prevent the damage and breakdown, and energy is needed for them. And this energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है ना, ये जो ब्रेक डाउन होती है, जो भी एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, ये कहाँ से आती है? Energy is needed for them. This energy comes from the outside body. Body के outside आती है. So there must be a process of transfer of source of energy from outside to body of the example, body of the organism. So where does this energy comes from? Again the question arises. So ये जो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ना, ये अंडरस्टैंड करके आपको पढ़ना पड़ेगा. It is not just you have to cram all this, you have to understand it. When you will understand the concept, then you can learn easily. So question is that where does this energy come from? Where does, so यहाँ पे थोड़ा सा लिखनी होगा, this energy come from, कि एनर्जी कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है, ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, ये बाहर से आती है. और बाहर से कहाँ से? The body size of the organism is to grow. Additional raw material will be also needed from the outside. अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल की बात हो रही है. रॉ मटेरियल कहाँ से आया? रॉ मटेरियल कहाँ से आया और एनर्जी कहाँ से आई है? ये दो क्वेश्चन हो गए. ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया आपका. उसके बाद है ये वाला आपका इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, एनर्जी. एक हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और एक रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं. एनर्जी एंड raw material. Energy and raw material. ये कहाँ से आ रहा है? Will also be needed outside since life on earth depends upon carbon based molecules. हाँ जी, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही है. Depending upon complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. Different types of organisms, different types of processes use करती है. The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. So these sources of energy therefore need to be broken down to build up, in the body, and must be finally converted to a uniform source of energy
that is used for various molecular movements. For this, a series of chemical reactions are necessary. सो बॉडी में जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं फूड रिसोर्सेज के, सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है. सो बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं, सिर्फ लैब्स में नहीं होते. बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं. बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, that is made up of carbon atom. That's why the carbon is the most important element in the periodic table. So ये सारे प्रोसेसेस बॉडी में कैसे होते हैं, फूड डिसॉल्व होता, ब्रेक डाउन होता, क्या उससे होता है, तो उसके पीछे जो है ये सारे रिएक्शंस होते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का मतलब होता है कि सेल में कि वन सेल, यूनिसेलुलर सेल कह लो या सिंगल सेल कह लो, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग द फूड. Exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and body design becomes more complex? So आपने पढ़ा होगा कि what are eukaryotes and what are prokaryotes, है ना. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मैं पी लिख देती हूँ, यूकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स में सिंगल सेल होता है, यूकैरियोट्स में डबल सेल होता है, और यूकैरियोट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. ये सब इन्वायरमेंट के कारण भी डिपेंड करता है. सो ये भी हम नहीं करेंगे, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. क्वेश्चंस का आपका अलग सेशन लगेगा. So we are going to start a new chapter today, that is life processes. So in this chapter, like, how do we tell the difference between what is alive? How do we know what is alive? If the person breathes, we only know this if a person breathes. How do we tell the difference? It means he or she is alive. If the person doesn't, it means he or she is not alive. But the question is, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? So if we see, so there are some common examples. Like, how do we tell the examples? Like if we see, how do we tell the difference? A cow chewing curd or a man shouting loudly on a street.